Welcome back to the another episode of AtomiX here, and today we are going to show you the new Honda CB300F, one of the few 300cc segment bikes which are available in India. So yeah, 300cc में आपको naked version में कुछ ही bikes आपको currently India में available हैं, and this one is one of them. So let's check it out. So now it's time to take an overview of this bike, and first of all take a look. पहले आप देख लीजिए how does it actually look. So this is the rear section and that's the side profile, and here it is. So starting with the front, तो front में आपको quite long face देखने को मिलता है यहाँ. You don't get any front visor at the front. So it just directly starts with the headlamp and then the instrument cluster. So yeah, at front you are getting the LED headlamps and the hazard lights with the LED indicators. Below that आपको यहाँ पे Showa की USD suspension देखने को मिलता है. These are the golden suspensions, and yeah, you can tell us whether you actually like this golden color or not, and does it actually suit with this color or any of the color for the 300F. Coming below that, so अगर यहाँ पे बात करें, it's the plastic mudguard at the front, and below under that you are getting the 110 by 70 17-inch wheel at the front. So yeah, at the front you are getting 110 by 70 17-inch wheel at the front. These are the radial tubeless tires, and it at the front only looks quite thick. Talking about the brakes, at the front you are getting this 276mm with the Nissan brake calipers, and Nissan is quite a for the sportier bikes, and it's a dual channel ABS as well. Now moving on to the little bit sideward, let's look at the design. तो डिजाइन का अगर हम बात करें, काफी ज़्यादा शार्प एजी का डिजाइन यहाँ पे देखने को मिलता है. 300F is a kind of naked bike with a sharp designs, whereas if you go towards the CB300R तो वहाँ पे आपको काफी curvy cafe racer and the round type design देखने को मिलता है. Now that's the engine compartment, तो उसकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे. Moving on, so these are the footrest, front and the rear. So yeah, that's the exhaust. तो exhaust की बात करें, looks quite bulky, but on size wise medium size, not quite long and neither too short. Coming to the rear wheel, so yeah, rear में आपको quite thick wheel देखने को मिलता है. So just give it a first look, तो आपको देख के पता चल जाएगा काफी ज़्यादा चौड़ा एंड काफी मोटा टायर है. And talking about the size, so yeah, this one is 150 by 60 17-inch wheel. So yeah, 150mm wide यहाँ पे आपको wheel देखने को मिलता है. That's the rear section. So आपको इस स्टाइल की rear LED tail lamps यहाँ पे देखने को मिलती है with LED indicators as rear as well. Talking about the suspension, तो यहाँ पे आपको monoshock suspension देखने को मिलता है. That's the adjustable one manually. तो इसके आपको controls नहीं मिलते हैं जो कि आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से कंट्रोल करते हो. On the left side, you are getting the quite thick and heavy looking sari guard, but that's of plastic, so you can easily remove it. And the bike might look more sportier and lightweight after this. That's all on you. So now let's talk about the engine section. So this is the CB300F, and for the actual displacement it is 293.5cc engine with the 4-valve and single spark. Actually it's an oil cooled engine and you don't get the liquid cool. So as you can see, it's the oil cooling the radiator. And for the gear, talking about the gear, so यहाँ पे आपको 6-speed manual gear shift देखने को मिलता है with the slipper and assist clutch. So yeah, you are getting the slipper and assist clutch in this bike. Now talking about the power figures, we are getting 24 brake horsepower and 25 Nm of torque in this bike. Yeah, that's a chain driven with the instrument cluster of CB300F. So first of all, talking about the size, so actually it's quite a small size as you can see, and just compared over here. So Honda में एक चीज है कि जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है उसका साइज काफी ज़्यादा छोटा मिलता है. So आपको थोड़ा बहुत फोकस करना पड़ता है इस स्क्रीन में, बिकॉज ये ओवरऑल इस साइज की है, बट द एक्चुअल स्क्रीन इज जस्ट दिस मच. So yeah, on the left side you are getting the RPM meter with the gear indicator at the center, and below that आपको fuel indicator मिल जाता है. Total RPM आपको यहाँ पे 12,000 RPM की लिमिट है.
and this is speedometer, and that's the trip meter. And on the right side you are getting the other functions like the total average speed, battery indicator, and the average mileage and all. So yeah, trip A and trip B are over here, and the total kilometers as well आपको यहीं पे देखने को मिल जाएंगे. Here you are getting the clock. On the top section you are getting the indicators. Indicator section आपको यहाँ पे left and right side मिल जाता है. That's the ABS, and here you are getting the high beam and the low beam. यहाँ पे आपको engine check light मिल जाती है. At the center that's nothing. For the neutral indicator, traction control on and traction control off. So that's all the things you are getting. And on the right side that's the thing जो कि आपको यहाँ पे switch के controls यहाँ पे देखने को मिलते हैं. Okay. Now the small thing कि आपको दो buttons यहाँ पे भी available हैं जो कि same functions करते हैं, and the over here as well, because if you just see तो यहाँ पे भी आपको same चीज functionality आपको available हो जाती है. But that's a little bit complicated if you are the first timer just like me. So अगर आप भी first timer हैं तो आपको यहाँ पे manual की जरूरत पड़ने वाली है, because I think I also need that. And that's the high beam, low beam. That's for the pass, and it's a small thing because I'm also not able to see if you are the first timer. तो आपको यहाँ पे high beam and low beam कैसे set करनी है वो मेरे को समझ नहीं आया. I'll just start it, and that's the exhaust note. And that's quite heavy exhaust note. So yeah, as you are seeing, तो यहाँ पे आपको high beam and low beam की like functionality दिख रही है, but how to just adjust it on the high beam, तो वो चीज़ मुझे समझ नहीं है. If you think you know that, just you can comment it down. And also yeah, you are also getting the Bluetooth connectivity on this bike, and just a small feature. So for the iPhone lovers and the others as well, they got the Type-C charging on their phones. तो यहाँ पे आपको चार्जिंग का सॉकेट भी देखने को मिलता है, बट दिस इज द टाइप सी, सो ऑल एंड्रॉइड यूजर्स माइट नॉट बी एबल टू यूज इट. दैट्स द थिंग, एंड दिस द व्यू ऑफ द हैंडल बार. तो काफी ज़्यादा चौड़ा आपको यहाँ पे हैंडल बार देखने को मिलता है. इट्स अ क्वाइट नॉर्मल लुकिंग rear view mirrors. Now I'll just give you a rear view of this bike and a little bit of side view. So that's how it actually looks, and I think now it's time to take a ride of this bike. And I told you जो फ्यूल है वो आपका टैंक माउंटेड मिलता है. काफ़ी वाइड इसका हैंडल है. इनके पास जो है ये पोजीशन इंडिकेटर इज क्वाइट विजिबल फ्रॉम दिस डिस्टेंस. Okay, this bike got a lot of torque. Just pushes you away. Sitting position is quite comfortable. सीट में आपको काफ़ी कंफर्ट मिलने वाला है. क्वाइट लेंथी सीट है, तो आप थोड़ा बहुत पुश बैक होके और या फिर थोड़ा बहुत फॉरवर्ड लीन होके बैठ सकते हैं. रियर सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाला है. कुशनिंग काफ़ी सॉफ्ट है इसमें. टैंक वाइज काफ़ी हम्प है. आगे बच्चा आप नहीं बैठा पाओगे इसमें, बच्चा साथ आसान में पहुँच जाएगा. एंड नॉट टॉकिंग अबाउट द फुट रेस्ट पोजीशन, तो वो चीज़ थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज द ग्राउंड क्लियरेंस इज़ क्वाइट गुड. तो उस केस में आपके जो फुट रेस्ट की पोजीशन है वो थोड़ी बहुत अपवर्ड, तो आपके जो नीज हैं वो काफ़ी बेंडेड रहेंगे. फुट रेस्ट थोड़ा बहुत हल्का सा स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे है. ऑन द अपर सेक्शन सीट्स आर गुड, हैंडल पोजीशन इज क्वाइट गुड, तो आपको कंधे में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. इफ यू आर द वन हु यूज्ड टू राइड टू मच ऑफ दिस स्पोर्ट्स बाइक, तो आपको फुट रेस्ट की इसकी आदत पहले से ही होगी. Just try the brakes.
are quite good. Let's check कोई पीछे से ना आ रहा हो, थोड़ा साइड में ट्राई करते हैं. Okay. Rear brake was a little bit on the softer side. TFT स्क्रीन जो आपको यहाँ पे डिजिटल स्क्रीन देखने को मिलती है, तो वो थोड़ी बहुत स्मॉलर साइज़ की है. फंक्शनलिटी इज़ गुड. जो फंक्शंस आपको इसमें मिल रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं. ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड ऑल, तो वो चीज़ आपको इसमें मिल जाती है. बट द साइज इज़ अ लिटिल बिट स्मॉलर फॉर द ऑल कनेक्टिविटी फंक्शंस एंड ऑल. तो उस चीज़ का थोड़ा बहुत यहाँ पे आप कह सकते हैं टू टेक योर पॉइंट्स. अदर थिंग, जो कॉम्प्लिकेशंस मेरे को इसमें फील होती हैं वो है इसके हाई बीम लो बीम का फंक्शन. वो मेरे को भी समझ में नहीं आया वो चलता कैसे है. तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस है. ट्रस्टवर्दी ब्रांड, लॉन्ग लाइफ इंजन, ब्रेकिंग फंक्शंस इज गुड. तो ब्रेक्स काफ़ी बढ़िया हैं फ्रंट के. दीज आर जस्ट grab on brakes. These are all the things to take the notes on and tell about how this actually works for you. Positioning and riding feature wise, this bike is quite good. Engine refinement is also good. तो आपको फुट रेस्ट में ऐसा कुछ, हायर रेस्ट में कुछ ऐसी दिक्कत नहीं होने. ऑल्सो आपका स्लीपर एंसिस प्लस वर्क्स ऑन ओनली वन डायरेक्शन ऑन द अपर साइड. On the bottom side doesn't work well. It's a single side slipper assist clutch. So yeah, talking about the riding quality of this bike, being a sportier and a naked bike, तो इसकी riding quality is quite on the comfort side. तो कुछ इसके कॉम्बिनेशन है जो इसको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल बनाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, सीट की कुशनिंग एंड अ वेल हाइटेड हैंडल बार्स. तो आपको इसके हैंडल बार की पोजीशन इज क्वाइट गुड दैट यू डोंट हैव टू लीन क्वाइट मच फॉरवर्ड और इट्स क्वाइट एट अ हाइट. तो काफ़ी डिसेंट एंड काफ़ी गुड पोजिशनिंग है इसके हैंडलबार्स की. सस्पेंशन ऑल्सो गोज अलॉन्ग विद दैट. तो इस चीज़ का कुछ चीज़ों का कॉम्बिनेशन ऐसा है जो आपकी राइड काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने वाला है. सो वेदर यू गो ऑन अ हाईवे क्रूजिंग और ऑन अ सिटी राइड, तो इस गाड़ी में आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड कराने वाली है. ऑन अ फ्यूअल सेक्शन, जो कि आपको थोड़ा बहुत साइड फील हो एट द फुट रेस्ट पोजिशन एट द फ्रंट साइड, तो वो आपको थोड़ी बहुत आपको अपनी सीट्स के काफ़ी क्लोज लगते हैं. सो आपको थोड़ा बहुत, सो एट अ सम पॉइंट यू विल फील लाइक your knee is getting too much pointed out. तो आप few things जो कि आपको नोट कर सकते हैं. So yeah, प्राइस सेगमेंट की अगर बात करें तो currently it's 1,70,000. that's the price range for this bike. तो 300cc का सेगमेंट ऐसा है for especially for the naked bikes, क्योंकि आपको यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी लेस मिलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे कंपटीशन इसकी अपनी एक सिबलिंग से हो जाता है विच इज द 300R. तो आपको एक थोड़ा कम्प्लीटली हायर सेगमेंट में पहुंच जाता है यहाँ तक 390 एंड 310 कैन बी अ गुड कंपैरिजन फॉर दिस बाइक which actually produces more power and more torque compared to this bike at this segment, but the price tag is also quite hefty. तो वहाँ पे आपको 2 लाख प्लस का प्राइस टैग वहाँ पे देखने को मिलता है. So for this price range, I believe this can be a good choice for you. For being a Honda, it can be a much reliable bike, much better efficient and trustworthy bike. Power figures are quite amazing, but something which is comparable with the other slightly lower segment bikes. तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत lower segment bikes में भी similar power figures देखने को मिल सकते हैं. But on the other section, this bike provides you a better premiumness and much better design and comfort. And that's all about from my side about the new Honda CB300F. This is Amit Singh signing off, and until next time, keep watching AtomiX.